Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Humanities Adda. We were doing chapter 1 Constitution why and how. So today in this video we will be finishing this chapter. So let us just begin where we left. We have to do the procedure वाला portion हमें start करना है. अब आप देखो कि जो importance of public reason है, पब्लिक रीजन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि पब्लिक रीजन एक्चुअली में होता क्या है. इसके बारे में हमने पिछले वाले लेक्चर में बात की थी. आप देखो कि पब्लिक रीजन का जो इम्पोर्टेंस है वो एम्फसाइज किया गया था इन दी मुंडेन प्रोसीजर ऑफ द असेंबली एज वेल. मंडेन प्रोसीजर्स ऑफ द असेंबली का मतलब यहाँ पे है कि जो टायरसम प्रोसीजर्स है, जो थोड़ी बोरिंग प्रोसीजर्स है, देयर आल्सो यू विल फाइंड दैट द importance of the public reason was emphasized and it was not ignored. Now the Constituent Assembly had 8 major committees on different subjects. So committees बनाई गई थी, 8 major committees थी अलग-अलग subjects पे. Usually Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Sardar Patel or B.R. Ambedkar chaired these committees. So these were the members and these were the people who were chairing these committees. Chairman थे ये लोग. These were not men who agreed with each other on many things. So if you look at these personalities, आप इनको देखोगे, इनके different opinions थे और इनके opinions clashing opinions भी रहते थे और काफी सारे ऐसे matters थे जिसपे ये लोग आपस में इनका एक तरीके से opinion clash करता था. For instance, Ambedkar had been a bitter critic of the Congress and Gandhi, accusing them of not doing enough for the upliftment of the scheduled caste. पटेल एंड नेहरू डिसअग्रीड ऑन मेनी इश्यूज. आप देखो ये लोग आपस में ही इनका बहुत सारे इश्यूज पे डिसएग्रीमेंट था. Nevertheless, they worked all together. Each committee usually drafted particular provisions of the constitution which were then subjected to debate by the entire assembly. तो ये जो आपकी अलग-अलग कमिटी थी, ये लोग पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे, ड्राफ्ट करते थे पर्टिकुलर सेक्शन. फॉर इंस्टेंस जो आपकी फंडामेंटल राइट्स वाली कमिटी है तो वो उससे रिलेटेड जो आपके प्रोविजंस है वो बनाएगी. एंड देन फिर जो पूरा आपकी जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, एंटायर असेंबली है, उस पर डिबेट करेगी. Usually an attempt was made to reach a consensus with a belief that provisions agreed to by all would not be detrimental to any particular interest. तो एक कंसेंसस एक तरीके से को मतलब एक तरीके से एक अटेम्प्ट मेड किया जाता था. अटेम्प्ट वाज मेड कि एक कंसेंसस पे टू रीच अ कंसेंसस कि एक बिलीफ के साथ, विद अ बिलीफ दैट जो प्रोविजंस है अग्री किए गए हैं बाय ऑल, दैट दे वुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू एनी ऑफ द एक किसी भी एक तरीके से पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए वो डेट्रीमेंटल ना हो वो प्रोविजंस. सम प्रोविजंस वर सब्जेक्ट टू द वोट. कुछ जो प्रोविजंस है उनको वोट के लिए पुट किया जाता था, सब्जेक्ट किया जाता था. But in each instance, every single argument, query or concern was responded with great care and in writing. तो जो भी हर केस में आप देखोगे, हर इंस्टेंस में आप देखोगे, जो भी क्वेरी होगी, कंसर्न होगा, उसको ग्रेट केयर के साथ एंड इनफैक्ट कंसर्न के साथ रिस्पॉन्ड किया जाता था. एंड राइटिंग में उसको रिस्पॉन्स दिया जाएगा, राइटिंग में उसको रिस्पॉन्स मिलेगा. एंड द असेंबली मेट फॉर 166 days spread over 2 years and 11 months. Its sessions were open to the press. Press was they were allowed to go and see the sessions, and the public alike. Public was also allowed to see the sessions. Now next topic is that inheritance of the nationalist movement. So, but no constitution is simply a product of the assembly that produces it. So, do you think that the constitution that we have is simply a product of the constituent assembly? No. Is it like that? We can say no. We can we know that our constitution, it is not simply the product of the constituent assembly. An assembly as diverse as the Constituent Assembly of India could not have functioned
if there was no background consensus on the main principles the constitution should enshrine. हमारे एक तरीके से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फंक्शन नहीं कर पाती इतने एक तरीके से यू कैन से इतनी एफिशिएंटली अगर एक बैकग्राउंड कंसेंसस नहीं होता उनके पास ऑन द मेन प्रिंसिपल्स कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजंस होंगे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या चीजें इंश्राइन करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दीज प्रिंसिपल्स वर फोर्ज्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था ये तो तभी उसी टाइम पे ये जो प्रिंसिपल्स हैं उसी टाइम से इन प्रिंसिपल्स को हमने धीरे धीरे करके कलेक्ट किया, फोर्ज किया। In a way, the Constituent Assembly was giving concrete shape to form the principles it had inherited from the nationalist movement. तो आप देखो कि कंक्रीट शेप एंड फॉर्म जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कंक्रीट शेप एंड फॉर्म उन्हीं प्रिंसिपल्स को दे रही थी, फॉर्म दे रही थी, शेप दे रही थी जो उसने इनहेरिट की थी फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट को। सो आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली it inherited the principles from the nationalist movement, and hence they were giving the shape and form to the those principles only. उन्हीं principles को वो एक तरीके से reshape कर रहे थे। For decades preceding the promulgation of the constitution, the nationalist movement had debated many questions that were relevant to the making of the constitution. आप देखोगे कि nationalist जो movement है उसमें बहुत सारे डिबेट हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस को डिबेट किया गया था, and that were later on relevant to the making of the constitution. The shape and the form of government, that India should have, the values it should uphold, these all the things these things were debated at a particular stage during the nationalist movement. The inequalities it should overcome basically, and answers forged in those debates were given their final form in the constitution. और इन्हीं डिबेट्स का जो आंसर निकल के आया था नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पे, उन्हीं आंसर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में एक तरीके से फ्रेम किया गया। Perhaps the best summary of the principles that nationalist movement brought to the constituent assembly is the objective resolution. तो आपको जो नेशनलिस्ट मूवमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक जो प्रिंसिपल्स एक तरीके से जो लेके आया था, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के थ्रू जो प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे, उसकी बेस्ट समरी आपको कहाँ मिलती है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। एंड दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड on on the first meeting that was held on 9th December 1946, and it was moved by Jawaharlal Nehru. And this resolution, it encapsulated the aspirations and values behind the constitution. What the previous section terms as substantive provisions of the constitution is inspired by and summed up by the values incorporated in the objective resolution. तो जो हमने प्रीवियस सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो आप देखोगे इंस्पायर्ड है और समड अप है इन्हीं बाय द वैल्यूज दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस ओनली। वो इन आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में देखने के लिए मिल जाएंगे। Based on this resolution, our constitution gave institutional expression to these फंडामेंटल कमिटमेंट्स। तो इन्हीं रेजोल्यूशन के बेसिस पे आप देखते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन दिया इन फंडामेंटल कमिटमेंट्स को। कौन कौन सी कमिटमेंट्स हैं ये? इक्वालिटी को फंडामेंटल एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन मिला, लिबर्टी को मिला, डेमोक्रेसी को मिला, सॉवरेनिटी को मिला, एंड अ कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी को मिला। दैट मीन्स अ मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी को। Thus, our constitution is not merely a maze of rules and procedures, but a moral commitment to establish a government that will fulfill the many promises that the nationalist movement held before the people. तो सिर्फ रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आप देख रहे हो कि सॉरी बट दिस इज अ मोरल कमिटमेंट है टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट दैट विल फुलफिल मेनी प्रोमिसेस जो आपके नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पे लोगों से किए गए थे।
वो सारे प्रोमिसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अलग अलग प्रोविजंस के एक तरीके से अलग अलग प्रोविजंस में, अलग अलग आर्टिकल्स में, थ्रू द फंडामेंटल राइट्स, थ्रू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड व्हाट नॉट. Now, main points of the objective resolutions we will look over here. India is an independent sovereign republic. India shall be union of erstwhile British Indian territories, Indian states, and other parts outside British India, and Indian states as are willing to be part of the union. Territories forming the union shall be autonomous units and exercise all powers and functions of the government and administration except those assigned to or vested in the union. All powers and authority of sovereign and independent India and its constitution shall flow from the people. All people of India shall be guaranteed and secured social, economic, and political justice, equality of status and opportunities, and equality before law, and fundamental freedoms of speech, expression, belief, faith, worship, vocation, association, and action subject to law and public morality. The minorities, backward and tribal areas, depressed and other backward classes shall be provided adequate safeguards. The territorial integrity of the Republic and its sovereign rights on land, sea, and air shall be maintained according to justice and law of civilized nations. The land would make full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind. So this was the objective resolution that was passed on 9th December 1946. And let me tell you one interesting fact. This is the objective resolution that was later on converted into the preamble of Indian Constitution. तो यही है बाद में चल के preamble to the Indian Constitution बन जाता है. तो ये आपको थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे familiar लगेगा. इसको ही थोड़ा बहुत कन्वर्ट करके चेंज करके preamble में कन्वर्ट कर दिया जाता है. So next we have the institutional arrangements. Third factor ensuring effectiveness of a constitution is a balanced arrangement of institutions of government. We have discussed this in the previous lectures, जो हमने executive, legislative and legislature and judiciary की बात की थी. The basic principle is that government must be democratic and committed to the welfare of the people. Democratic government होनी चाहिए and the welfare of the people के towards committed होनी चाहिए. The Constituent Assembly spent a lot of time on evolving the right balance among the various institutions like executive, the legislature, and the judiciary. This led to the adoption of parliamentary form of government आपको देखने के लिए मिलता है. This also we have done, and the federal arrangement भी हमने discuss किया है, which would distribute governmental powers between the legislature and the executive on one hand and between the states and the central government on the other hand. तो आपको इस तरीके का division of powers देखने के लिए मिलेगा. Okay, I hope this is clear to everyone. Parliamentary form of government and the federal system of government, federal arrangement. Now, while evolving the most balanced governmental arrangements, the makers of our constitution did not hesitate to learn from experiments and experiences of other countries. So you will see our constitution have a lot of provisions that are borrowed from other other constitution of other countries. Thus the framer of the constitution were not averse. They did not move away from borrowing from other constitutional traditions. Indeed, it is a testament to their wide learning that they could lay their hands upon any intellectual argument or historical example that was necessary for fulfilling the task at hand,
So they borrowed a number of provisions from different countries. They borrowed, yes, they borrowed, and they actually did not borrow it blindly. They did some modification, and कुछ modification के साथ borrow किया, कुछ changes भी लाए, कुछ बिना changes के borrow किया, and they borrowed the best, best provisions को borrow किया. But borrowing these ideas was not slavish imitation. Imitation नहीं था, far from it. Each provision of the constitution had to be defended on grounds that it was suited to Indian problems and aspiration. उन्हीं provisions को borrow किया गया जो Indian एक तरीके से इंडिया के लिए suited था, Indian problems and aspiration के लिए suited था. India was extremely lucky to have an assembly that, instead of being parochial in its outlook, could take the best available everywhere in the world and and make it their own. Parochial here stands for narrow. Narrow nahi thi, narrow minded nahi thi hamari assembly, and they took the best available. हर जगह से जितना भी उन्हें best available था उन्होंने लिया. उन्होंने एक तरीके से they borrowed, and then they compiled it, they included it in our constitution. And some of the provisions over here are from British constitution. We took the first past the post ballot, ये आपका voting system है. Parliamentary form of government we took, the idea of rule of law we took, institution of the speaker and his role we took, in the Lok Sabha. लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमने लिया. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आप देखो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. एंड यूनाइटेड यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आप देखो तो चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से देखो तो क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, a federal system with strong central government. The idea of residual powers. Residual powers are those, if you see the law making powers, they are divided between the union government and the state government. So there is one union list and there is one the state list, and there is one another list आपकी जिसमें दो कुछ बाकी के जो रह जाते हैं मैटर्स वो रहते हैं. एंड देन रेसिडुअल मैटर्स रहते हैं, तो उसमें सिर्फ आपकी जो यूनियन है वही लॉ बना सकती है. तो वो एक आपका वो मैटर होता है. तो 3 काइंड्स ऑफ लिस्ट आर देयर. जस्ट अ सेकेंड. सो आपके इसके अलावा इन कॉन्स्टिट्यूशंस के अलावा, इनफैक्ट apart from these constitutions there are many more other constitutions. Then okay, I hope that you are getting these things. Just a minute. We are done with this. Okay, so we have the conclusion over here. It is a tribute to the wisdom of foresight that the makers of the constitution that they presented to the nation or document that enshrined fundamental values and highest aspirations shared by the people. This is one of the reasons why most intricately crafted document has not only survived but became a living reality, while so many other constitution have perished with the paper they were written on. Okay. Then India's constitution is a unique document which in turn became an exemplar for other constitutions, most notably for South Africa. The main purpose behind the long search that went on for almost 3 years was to strike right balance so that institutions created by the constitution would not be haphazard or tentative arrangements but would be able to accommodate the aspirations of the people for India for a long time to come. सबसे ज्यादा जो आपको मतलब एक लॉन्ग सर्च जो था वेंट ऑन, वो हुआ कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जहाँ पे आई वो था कि एक राइट बैलेंस मिले इंस्टीट्यूशंस के बीच में, एंड एस्पिरेशंस जो है लोगों का वो अकोमोडेट हो सके, अरेंजमेंट्स जो है सही से हो सके. एंड यू विल नो more about these arrangements through the study of the remaining chapters in in this book.
ओके सो यहाँ पे हमने बात की थी 3 लिस्ट के बारे में. वन वाज द स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में आपके जो मैटर्स होते हैं उसमें दोनों ही स्टेट और यूनियन लेजिस्लेट कर सकती है. बट ऑन द अदर हैंड, अपार्ट फ्रॉम द मैटर्स मेंशन्ड इन द 3 लिस्ट, कुछ अगर ऐसा मैटर है जो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, देन ओनली द यूनियन इज अलाउड टू मेक लॉज ऑन दैट. सो दैट इज द केस ऑफ द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स. तो वो हमें कहाँ से मिलता है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. ये आइडिया, मतलब ये जो प्रोविजन है वो हमने अडॉप्ट किया. सो दिस इज इट, द चैप्टर इज फिनिश नाउ. आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड प्लीज like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much for watching. Thank you again for watching this video. Bye bye.